हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत ओपीएससी ओमास रो प्रीवियस एग्जाम रो क्वेश्चंस आमे ए वीडियो रे डिस्कस करबा या पूर्व मु गोटे वीडियो ऑलरेडी करि सारिछि जोथरे कि फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आमे डिस्कस करछे जोथरे कि बहुत गुडी क्वेश्चंस भूल बारिथिला तार ऑप्शंस गुडी को भूल थिला आ से गुडी को आमे रेक्टिफाई मध्य करिथिले एवं से वीडियो रो लिंक ए वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे मु पिन कर देछि जो माने देखिया चाहउछंती से माने देखि परिबे। तो ए वीडियो रे आमे 51 क्वेश्चन नंबर 51 रो स्टार्ट करबा। तो क्वेश्चन तो भूल रोचे ऑप्शंस भी भूल रोचे। तो क्वेश्चन नंबर 51 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम को कंट्री रो अना जाइछे। तार करेक्ट आंसर कोन हबो आयरलैंड रो कोठो अना जाइछे आयरलैंड रो ठीक अछि। नेक्स्ट the Indian Federation can be converted into unitary one at the time of general elections by a 2/3 majority decision of the parliament if the legislatures of a majority of the states pass a resolution to that effect during national emergency। तो करेक्ट आंसर कोन हबो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। स्टेट रो किछि भी रोल रहिबोनी नेशनल इमरजेंसी जेतले अप्लाई हेबो सेतले स्टेट रो किछि भी रोल रहिबोनी प्रेसिडेंस रूल चलिबो से हिसाब रे करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी। 53 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल टू कौन करिया पई डिवाइड द रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट द प्लानिंग एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स to settle the disputes between various states or states and centers none of which कौन होगा यार correct answer to settle the disputes between various states or states and center सेतबेले ही जाय कि प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश ए इंटरस्टेट काउंसिल क्वेश्चन आसे इंटरस्टेट काउंसिल को किए हेड करंती तो प्रेसिडेंट विल बी करेक्ट आंसर क्लियर। 54 Which one of the following fundamental rights was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? बहुत इजी क्वेश्चन। तारा करेक्ट आंसर कोन हबो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ठीक अछि। 55 Arrange the emergence of the following pressure groups in Indian politics chronologically काबरे कोटा आस्तिला सेमती ठीक अछि। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये केबे आस्तिला 1920। हिंद मजदूर सभा केबे आस्तिला 1948। ऑल इंडिया किसान सभा केबे आस्तिला 1936 रे आस्तिला। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एटा कोन फिक्की को आजे 1927 रे आस्तिला। तो से हिसाब रे फर्स्ट कोटा होची 1 टा होची 180 एठी अछि तापरे सेकेंड रे आसी जाउची ऑल इंडिया किसान सभा जोडा कि 1936 रे आस्तिला सेकेंड रे होची तो ये केते रहची 3 रे भूल कहली कि तापरे 4 होबा कथा सॉरी 4 ना तो ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर 1927 फिक्की अछि तो करेक्ट आंसर हबो कोन 1432 ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट 55 पर 56 One university student seeks to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among others that. Author question पढ़िबा One university student seeks to get elected to the municipal council of the city of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among others that. कौन है दरकार he obtains permission from the registrar of his university, he is the member of some political parties, his name figures in the voters list, he submits a declaration owing allegiance to the Constitution of India। तो सबुठ बेसिक जिनस होची his name figures in the voters list बुझिला। जदि भी आपनकर किसी डाउट थिबो किंबा मोर आंसर को नेकी किसी कोटी प्रॉब्लम थिबो देन कमेंट करिवे मु निश्चित रिप्लाई देबी। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन कोठु मिले तांको सैलरी आउ अलाउंसेस जजेस मानको
तो करेक्ट आंसर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट रू मिले जदि यही हाई कोर्ट रो जजेस माने रिटायर्ड नहीं जानती रिटायर्ड हो जाती आउ जो पेंशन मिलवा स्टार्ट हुए से पेंशन मिलिबो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू किंतु सुप्रीम कोर्ट रो जजेस होंतु तांकर अलाउंसेस हो तांकर सैलरीज हो ताउ तांकर पेंशन भी हो से सब किंतु स्टार्टिंग रू ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू आसीबो किंतु जेतला हाई कोर्ट रो जजेस जने कार्यरत अछंती सेतेबेले से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट सही स्टेट रे हुई पाइबे से क्लियर नेक्स्ट computation of gender inequality index is made by considering the following disadvantages for women कौन कंसीडर करा जाउछि कैलोरी इंटेक cereals consumption living standard and number of live birth non availability of safe drinking water free air and timely health care lack of rest and enjoyment of leisure reproductive health education empowerment and participation in labor market. The computation of gender inequality index is made by considering the following disadvantage for या भितर को disadvantages को follow करी कि gender inequality index बसुची कौन हबो तो करेक्ट आंसर हबो reproductive health education empowerment and participation in labor market बुझिएला next question number 59 who has advocated providing urban amenities in rural area for alleviating poverty in India किए advocate करथिले providing urban amenities in rural areas for alleviating poverty in India rural area रे urban amenities provide करिवा किए कहथिले मोहनदास करमचंद गांधी in his my experiments and with truth Jawaharlal Nehru in his the discovery of India B.S. Minhas in his planning and the poor APJ Abdul Kalam in his India 2020 a vision of the new millennium कोथरे कुहा जाइतिला ओडिया क्वेश्चन एटा तो करेक्ट आंसर हबो APJ Abdul Kalam in his India 2020 a vision of the new millennium clear next question number 60 which one of the following is used to compute the total fertility rate हिसाब करिया पय कंप्यूट करिया पय कोटा को बेसिस निया जाय कोटा को कंसीडर करा जाय number of live births by a woman during her entire reproductive period number of women in their reproductive period the ratio of women in their reproductive period to total women the number of total births live births plus stillbirths per woman there correct answer our number of live births by a woman during her entire reproductive period जोटा कि 15 to 49 consider करा जाए ठीक अछि next in India a scheduled bank is one which is entered in the in India a scheduled bank is one which is entered in the Banking Regulation Act 1949 हबनी New Economic Policy of the Government of India 1991 भी हबनी केबे एंटर हला Second Schedule of RBI Act 1934 Second Schedule of RBI Act 1934 ठीक अछि Next, which 5-year plan in India for the first time emphasized sustained growth of software and information technology enabled services? को 5-year plan रे मेंशन करा जाइतिला एथरे टिके लैंग्वेज डिफरेंट कर देछि first time emphasized sustained growth of software and information technology enabled services ठीक अछि 9th 5-year plan तो होबनी 10th भी होबनी 11th भी होबनी 12 5-year plan मोय आकु कहर रीजन होची जेहेतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को थाय जगह रे यूज करा जाईची ठीक अछि नेक्स्ट which one of the following is the definition of density of population ର definition कोन average number of persons living per square meter ना
The ratio of average number of urban population living per square kilometer to average number of rural population living in per square kilometer. Chance nahi. The number of total population living per square mile. Na mile nuho. Average number of person living per square kilometer. Density. Clear? Comment box रे comment करिवे. According to 2011 census, आम इंडिया को स्टेट रे सबुठु अधिक population density देखिया को मिलुची. Question number 64. Integrated Child Development Services ICDS scheme was introduced in India. केबे introduce हेतिला Integrated Child Development Services ICDS in 1975 for providing food supplementation to children and pregnant and or nursing women. एटा ठीक अछि. Date होची 2nd October. 2nd October रे. Clear? Next 64 पर 65. Which of the following is not a non-conventional source of energy? Non-conventional source of energy. तो कोडा wind energy, solar energy, energy from burning animal dung, tidal energy. तो correct answer कौन होगा? Energy from burning animal dung. कौन पाई? Personal case रे mostly एटा use करा जाए. So according to question, not a non-conventional source of energy, ताहले होगा energy from burning animal dung. 66. Though industrial licensing has been abolished in India with the adoption of LPG program, it is still valid for the following industries. इधर LPG का हुआ जाए. LPG program कौन actually? Liberalization, privatization, एल हबो liberalization, privatization, और जी रहला globalization. बुझिएला एल रहला liberalization, पी रहला privatization, जी रहला globalization. So according to question, though industrial licensing and has been abolished in India with the adoption of LPG. तो LPG प्रोग्राम रा adoption पर industrial licensing बंद कर दिया गला. It is still valid for the following industry. को इंडस्ट्री पे still valid. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. न्यूज प्रिंट कलर टीवी एडा हबनी. ड्रग्स फार्मास्यूटिकल एंड स्टील एंड आयरन भी हबनी. प्लाईवुड हाजर्डस केमिकल्स इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इक्विपमेंट एंड सिगार्स ठीक अच्छी बट एथरे प्रोब्लेम कौन जानी एथरे प्रोब्लेम होची ए जगह देची एस्बेस्टस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड एल्युमिनियम. ऑप्शन सी आंसर हवा कथा बट ए जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव मेंशन करा जायची एटा भी हबो एथरे बुझेला. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव मध्य ए जगह रे इंसर्ट हबो आ ए जगह रे प्लाईवुड टा हबनी. हाजर्डस केमिकल ठीक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इक्विपमेंट मध्य ठीक अच्छी सिगार्स भी ठीक अच्छी बट इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव भी या भीतर इंक्लूड आसीबो. तो एटा टिके प्रॉब्लम अच्छी यार ऑप्शंस रे ठीक अच्छी. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 67. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया. या भीतर कोटा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया. Joint participation between indigenous farms and foreign governments, joint participation between foreign farms and Indian government, joint participation between foreign MNCs and Indian PSUs, joint participation between foreign PSUs and Indian PSUs. एथर करेक्ट आंसर हबो joint participation between foreign MNCs and Indian PSUs. माने फॉरेन एमएनसी और इंडियन पीएसयू मध्य पार्टनरशिप को कौन कह जाए फॉरेन कोलैबोरेशन ठीक अच्छे. नेक्स्ट व्हाट इज मीन्ड बाय फूड प्राइस इन्फ्लेशन. फूड प्राइस इन्फ्लेशन यादरू कहा कह जाए. इट इज ए शार्पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स रिलेटेड टू दोज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ना. इट इज ए शार्पर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल्स रिलेटिव टू द ओवरऑल
It is the sharper increase, ठीक कथा, sharper increase in the price of food articles relative to the overall prices of non-food articles only. Option C होगा correct answer. Non-food particles देछि जोर non-manufacturers non-food particles देछि, ठीक अछि. Option C will be correct answer. Which one of the component of petrochemical industry? Petrochemical industry रो यात्रु कोटा गोटे component metal and concrete pipes, edible oils, gold mining, plastics. Petrochemical industry रे plastic रो use, ठीक अछि. With which the call money market deals? Call money market का सहित डील करे? Very short term funds सहित. Short term पाई लोन बहुत हुए, ठीक अछि. Next. Which one is a source of non-tax revenue of the government of India? या भितर कोटा source नुह ना. Which one is a source of non-tax revenue? Source of non-tax revenue of the government of India. Non-tax revenue, borrowing from foreign government, aids from foreign countries, na. Disposing gold reserve of India with foreign central banks, na. Interest receipts. Which one is a source of non-tax revenue? अच्छा, interest अपनी क्वाड revenue tax लगी को, तो correct answer obviously D ही होगा, interest receipt. The abundance of a species population within a habitat is called. प्रचुर मात्रा गोटे species रो population गोटे particular habitat ताको कौन कहबा? Relative density, regional density, absolute density, niche density. ताको कहबा niche density, ताको कहबा niche density. Clear? Next, 73. In a food chain of grassland ecosystem, the top consumer are. Top consumer कोटा, top consumer. Herbivores तो भूल भी होबनी, consumer कहछि पुनी top, तो correct answer हबो carnivores. Herbivores भी होबनी, correct answer हबो carnivores. देखो जहाँ भी भूल पाइबे कमेंट करिवे प्लीज. Question number 74. How is oxygen cycle affected? How is oxygen cycle affected? Human activities, running automobiles, consumption of fossil fuels. तो correct code कोड़ा हबो कहा द्वारा affected हुए oxygen cycle? Human activities रू हुए, running automobiles रू हुए, consumption of fossil fuels रू मध्य हुए, तो तीनटा जाको, तो option D will be correct answer. Project Tiger was launched by the recommendation of Indian Board of Wildlife in क्यों वर्ष? करेक्ट आंसर हबो 1973 1 एप्रिल रे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक अछि. अच्छा, मगर कंजर्वेशन ओडिसा रे प्लस क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रो जो प्रोजेक्ट ए सब होइतिला केबे? 1975 रे, ठीक अछि. नेक्स्ट. Recently, for the first time in our country, which of the following states has declared a particular butterfly as a state butterfly? Particular butterfly को state butterfly बोली क्यों state declare करछि? तो एटा को मु जहाँ देखी छि इंटरनेट रे, ये 2015 रो करंट अफेयर कहि परिबा. आ एटा फर्स्ट स्टेट जे कि बटरफ्लाई घोषित माने डिक्लेयर कला, कोन ता ना थिला? ब्लू मोरमन, जोटा कि महाराष्ट्र स्टेट डिक्लेयर करथिला. क्लियर? नेक्स्ट. If you walk through countrywide, you are likely to see some birds talking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. Which of the following is or are such birds? Birds or insects? Painted stork, common myna, black-necked crane. एजारे क्रेन माने तो सारस पक्षी जोटा कुआ जाए. और पेंटेड स्टॉक
ये दीटा जाक पानी रे रुहंती माने पानी पाखापाखी माने वाटर बॉडी रे रुहंती बट मैना तो रुहेनी तो से हिसाब रे कौन आउ थोड़े क्वेश्चन देखिवा इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री वर्ड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टॉकिंग एलोंग साइड द कैटल टू कैटल कहिछि करेक्ट आंसर हो कोन हबो केवल 2 कारण 1 आउ 3 ए माने तो पानी वाटर बॉडी रे रहले आ कॉमन मैना ही रहला जे कि से इंसेक्ट खाइबो किबा से एरिया रे बुलिबो ऑप्शन 2 माने 2 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज बीओडी बीओडी रो फुल फॉर्म कोन बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड माने अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन the amount of O2 utilized by microorganisms for decomposition option B hobo era correct answer the amount of O2 utilized by organisms in water the amount of O2 utilized by microorganisms for decomposition the total amount of O2 present in water na the total amount of O2 present in water hoboni the amount of O2 utilized by organisms in water na the amount of O2 utilized by microorganisms for decomposition option B होबो यार करेक्ट आंसर जदि आपन कोठी भूल लाउची प्लीज कमेंट करबा को भूलिबेनी क्वेश्चन नंबर 79 recent studies indicate that two of the most dangerous components of air pollution around major cities in the development nations are कोन से दीटा को two major components of air pollution fine particles and sulfur pollution carbon monoxide and ozone आउ कोन अछि lead and volatile organic compounds correct answer हबो lead and volatile organic compounds mostly ground रे आ water body रे देखिया को मिले ठीक अछि fine particles and sulfur pollution fine particles and sulfur pollution recently studies indicate that the two of the most dangerous components of air pollution around major city in the development nation अच्छा यार करेक्ट आंसर हो फाइन पार्टिकल्स एंड सल्फर पोल्यूशन लेड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक तो सॉइल रे देखिया को मिले वाटर बॉडी रे भी मिले अच्छा ये क्वेश्चन में मुझे डाउट रे अछि आपण माने ए किंबा सी हबो मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि जणेबे क्वेश्चन नंबर 79 कोन आपण को हिसाब रे क्वेश्चन नंबर 80 देखिबा कंपेयर टू 50 इयर्स एगो the thinning ozone layer has produced dramatic increase in case of asthma color blindness cataracts skin cancer यार कैटराक्ट माने होची मोतिया बिंदु ना सुनिथिबे मोतिया बिंदु और स्किन कैंसर तो कोन जानि चंती और अस्थमा तो जानि चंती तो क्वेश्चन देजी कंपेयर टू 50 इयर्स एगो द थिनिंग ओजोन लेयर हैज प्रोड्यूस्ड ड्रामेटिक इंक्रीज इन द केस ऑफ कोन इंक्रीज करिछि स्किन कैंसर स्किन कैंसर तो करेक्ट आंसर हबो कोन कोन इंक्रीज करिछि बोली से पचारछि कोन इंक्रीज करिछि तो कोन इंक्रीज करिछि जदि देखिबा ताहाले मोतिया बिंदु सहित स्किन कैंसर कारण कलर ब्लाइंडनेस तो हबनी आस्थमा भी हबनी स्किन कैंसर तो आमे हबो कंपलसरी जानी जे ता सहित मोतिया बिंदु को भी कंसीडर करिवा ठीक अछि नेक्स्ट which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India
आर्सेनिक, सॉर्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्माल्डिहाइड, यूरानियम। तो करेक्ट आंसर हम कौन? फ्लोराइड। करेक्ट आंसर हम फ्लोराइड। केवल फ्लोराइड कहीं यूरानियम भी देखा मिले बहुत लेस अमाउंट रे, बट देखा मिले। आर्सेनिक देखा मिले। अच्छा तले आहरी कौन अच्छी? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ओ। अच्छा ठीक अच्छे ना। आर्सेनिक देखा मिले, फ्लोराइड देखा मिले, यूरानियम देखा मिले, फॉर्माल्डिहाइड तो चांस नहीं, सॉर्बिटॉल मध्य चांस नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन हम? 135 135 135 सी रे अच्छी। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोनिंग इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस। क्लोनिंग केतल करा जाए? मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पे, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पे, बोथ ए एंड बी पे, नन ऑफ दिस। दीटा जगह पे मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पे और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पे यूज करा जाए। ठीक अच्छे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कौन? ह्यूमन रो शेप, स्ट्रक्चर, साइज स्टडी को कह जाए मॉर्फोलॉजी। ठीक अच्छे। और जियोमॉर्फोलॉजी जदि लिखा जाइथिबो, जियोमॉर्फोलॉजी रो मीनिंग कौन? हिल्स, रिवर, ए मानकर स्टडी को कह जाए जियोमॉर्फोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, एरोसॉल इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ कहार? विषम मिश्रण जोटा कह जाए। भूल कहली कि हेटेरोजेनियस विषम हेनी। हाँ विषम हम, बट से माने मिसी जाउथुवे, माने मिसु नथुवे, जेमती कि ऑयल आउ वाटर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पानी आउ बाली, पानी सहित बाली मिसले जेमती। बट होमोजेनियस जेतले कहजिबो सेतले कोन कहबे आपण? जेमती कि सॉल्ट प्लस वाटर हो, सुगर प्लस वाटर हो, एटा हला सब होमोजेनियस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरोसोल इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ कहार? गैस एंड सॉलिड, माने एयर एंड सॉलिड कहि परिबा एरोसोल। ठीक अछि। नेक्स्ट, which of the following is not magnetic? या तो गोटा magnetic नो, आयरन, कोबाल्ट, लेड, निकेल। तो करेक्ट आंसर हम लेड। करेक्ट आंसर हम लेड। कारण कौन? नॉन फेरस, नॉन फेरस हूँ लेड। ये निकेल किंतु देखंतु, ए निकेल भी होची नॉन फेरस, बट ये मैग्नेटिक। बुझेला? नॉन फेरस तो निकेल भी लेड भी, लेड किंतु नॉन फेरस है कि मैग्नेटिक नुह, किंतु निकेल नॉन फेरस किंतु मैग्नेटिक। एक्सेप्शनल केस भी थाए। The formula for conversion of a temperature from Kelvin to Celsius is Kelvin to Celsius। चेंज करिया पई तार जो फॉर्मूला कोन? अच्छा एटा जानिथिबे निश्चित, 1 ही हबो। टेम्परेचर जोटा कि सेल्सियस रे अछि, सेंटीग्रेड रे इक्वल टू केल्विन माइनस 273, किंबा 1 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। एमती भी लिखि परबी। आहरी गोटे एमती भी लिखि परबी, सेंटीग्रेड इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 होल इंटू 5/9। आपको मन रखिए, बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन आसे आपको नेकी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? या तो कोटा करेक्ट नुह। कॉमेट्स आर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ओ कोटा नुह, ताले एटा तो ठीक अच्छे। दे हैव ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल। ठीक अच्छे। टेल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। एटा भूल अच्छे, नॉट करेक्ट कहिछि। टेल इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सन नुहे, अवे द सन हबो। बुझेला? अवे द सन टेल्स थाए। नेक्स्ट, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक कथा। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर रु फॉर्म होतबा इमेज को टाइप रो?
real at the surface of mirror and enlarged, real behind the mirror and of same size, virtual behind the mirror and of the same size. तो correct answer option C, virtual ରହିବ, behind the mirror ରହିବ and of the same size भी ରହିବ केतेबेले plain mirror रे, virtual behind the mirror and same size. A child eats food rich in carbohydrates and avoids protein in the diet. Which type of nutritional deficiency will affect the child? ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ୟାର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ, କ୍ୱାସିଓରକର। ଏ କ୍ୱାସିଓରକର କ'ଣ? ଅପପୃଷ୍ଟି, ଅପପୃଷ୍ଟି ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନାକ୍ଟାଲୋपिଆ, ନାକ୍ଟାଲୋपिଆ କ'ଣ? ভিটামিন এ অভাবରୁ ହୁଏ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସକୁ ମାନେ ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାକ୍ଟାଲୋଫିଆ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆନିମିଆ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆରାମସେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ୟାର ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାସିଓରକର ୟା ମିନିଂ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ନାକ୍ଟାଲୋଫିଆ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ। When antibodies extracted from other animals are injected into your body, what kind of immunity do you gain? Antibody ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନିମଲରୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ what kind of immunity do you gain ବୋଲି କହିବା। ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଲେ ବୋଲି କହିବା। artificially active acquired immunity, artificially passive acquired immunity, naturally active acquired immunity, naturally passive acquired immunity, କୋଉ ଟାଇପର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗେନ୍ କଲେ ବୋଲି କହିବା। यार करेक्ट आंसर कौन हम? वीक बॉडी पाई दरकार पैसिव, तो नेचुरली तो हबनी, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हबनी कि नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हबनी। यार करेक्ट आंसर कौन हम? यार आंसर आपण मैंने कमेंट करेंगे, मोर भी यार टिके डाउट अच्छी। आउ सब डाउट क्वेश्चन सब मु बहुत शीघ्र सॉल्व करी क्वेश्चंस गुड़ी को लेकिन मु वीडियोज करी, जेकोसी भी जनरल नॉलेज रो वीडियोज करी ए क्वेश्चंस को ही आनिबी आ ए क्वेश्चंस को ही डिस्कस करी, से डोंट वरी, तो टेंशन हबार भी किसी नहीं। Which one of the following gland is both exocrine and endocrine? या भीतर को ग्लैंड एक्सोक्राइन आउ एंडोक्राइन? तार करेक्ट आंसर कौन हम? pancreas, correct answer of pancreas. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to कौन पाई? The reason कौन? Due to atmospheric pressure. Due to atmospheric pressure. Which is not a greenhouse gas? Nitrogen, methane, nitrous oxide, carbon dioxide. कोटा नुह? Nitrogen टा greenhouse gas नुह। Which one of the following is not linked to imbalanced diet? याद्र कोटा लिंक नहीं imbalanced diet सहित। थैलासेमिया, बोन रिलेटेड को थैलासेमिया कहा जाए कि ओस्टियोपोरोसिस, सॉरी osteoporosis, bone related problem. Which one of the following is not linked to the imbalanced diet? तो bone related problem हेले ताकू osteoporosis कहबा। thalassemia, thalassemia, सॉरी thalassemia तो गोटे टाइप रो हेरेडिटरी कहि परिबा, माने हेमोग्लोबिन रो जदी
प्रोब्लेम होतो माने हीमोग्लोबिन जदि क्रिएट हे पार नथुवो यूजुअल रु कम होतो सेतले थैलासीमिया डिजीज देखिया को मिले तो ऑब्वियसली हार्ट डिजीज तो हबो नहीं डायबिटीज भी हबो नहीं इम्बैलेंस डाइट रु ऑब्वियसली थैलासीमिया हबो हीमोग्लोबिन रो क्रिएशन हे पारिबोनी ठीक रे तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट batteries electric cfl bulbs and electronic items are कौन biodegradable recyclable and hazardous waste माने रिसाइकल करी हबो और हेटा hazardous waste यार करेक्ट आंसर कौन हबो रिसाइकल भी करी हबो और hazardous waste मध्य सेटा ठीक अछि रिसाइकलेबल भी मध्य और hazardous waste भी तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 95 which of the following is not correct कोटा correct नुह exercise does not help in managing psychological discomfort exercise does not help in managing psychological discomfort कोटा correct नुह तो एटा ही correct नुह कारण exercise increases cardio respiratory fitness ठीक अछि exercise reduces risk of diabetes ठीक अछि exercise helps in managing bone health ठीक अछि तो एटा ही भूल अछि question number 96 the blue color of water in the sea is due to बहुत common question scattering of blue light by water molecules ए जारे अछि reflection of blue sky by sea water reflection of blue light by impurities in sea water na absorption of other colors except blue by water molecules no scattering of blue light by water molecules magnetic resonance imaging mri is used in medical diagnosis to obtain images of internal organs of the body this is primarily possible because reason कोन mri हे पारुची बॉडी भीतर रो organs को नेकी organs रो पोजीशन जानी होची organs related किछि problems भी जानी होची mri through रू how it works our body possesses a permanent mri uses first option तो भूले भी होबनी कोन देजी भी जणा नै first option तो chance नै हबर MRI uses an external magnet to generate a magnetic field in our body. ठीक ଅଛି এটা ions motion along our nerve cells generate magnetic field and none of these तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी जो मानको सी लागुची कमेंट करि परिबे बट मो हिसाब रे बी हो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज याद कोडा नाइट ब्लाइंडनेस डायबिटीज तो नुह हाइपरटेंशन भी नुह किडनी स्टोन्स भी नुह तो करेक्ट आंसर हम नाइट ब्लाइंडनेस टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ हैव हाई रेजिस्टेंस तार रेजिस्टेंस अधिक ना मेल्टिंग पॉइंट तार अधिक ना कंडक्टेंस से अधिक रीजन कौन हाई रेजिस्टेंस अच्छी ठीक अच्छे मेल्टिंग पॉइंट आउ हाई कंडक्टेंस या कौन ठीक हम देखो कंडक्टेंस हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या सहित रेजिस्टेंस सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो से हिसाब रे कौन हम जोटा गोटे हम हैव हाई रेजिस्टेंस विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट 1 and 2 हाई रेजिस्टेंस थाए आउ मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक थाए जेहेतु कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस where does computer add and compare data where does computer add and compare data hard disk रे monitor रे memory chip रे CPU chip रे तो करेक्ट आंसर हम CPU chip रे जति थिला जहां भी किसी भूल पाउछन्ती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु और जो क्वेश्चन रे डाउट अछि ता मध्ये कमेंट करंतु एई सब क्वेश्चंस जहां भी डाउट रहला किबा जोटार आंसर भी मु देइनी से सब क्वेश्चंस को आउ थरा में डिस्कस करिवा अलगा वीडियो रे तो वीडियो केमति लागला कोन लागला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनबे फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करथले सब्सक्राइब करके निजरो सपोर्ट निश्चित देबे
तो वीडियो कंप्लीट देखि धन्यवाद।